हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में लर्न करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड 10 अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट लर्न करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्ञान विजर्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं अजमल। Let's solve question from practice set 4.1. First question is, Pawan medical supplies medicines. On some medicines, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? CGST stands for Central Government Goods and Service Tax. SGST stands for State Government Goods and Service Tax. Always remember, whatever GST is collected, that will be shared equally between state and central government. That means rate of CGST is equal to rate of SGST, and when both are shared equally, then it will be half of the rate of the GST. Rate of GST is given as 12%, therefore it will be equal to half into 12%, that is equal to 6%. That means rate of CGST and rate of SGST both are 6%. Question number 2. On certain article, if rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of CGST? Same formula. GST is always shared equally between the state and central government. That is, rate of SGST is equal to rate of CGST, and rate of CGST is given as 9%. Therefore, rate of SGST will be equal to 9%. And what is the rate of GST? Rate of GST is equal to twice the rate of the CGST or SGST. 2 into 9%, this is equal to 18%. You can also write it as the rate of GST is equal to rate of CGST plus rate of SGST, and 9 plus 9% is 18%. You can solve in both ways. Question number 3. Miss Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन। तो पहले में जो है ये देखना पड़ेगा टैक्सेबल वैल्यू होती क्या है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज की होती है जिस पर जीएसटी लेवी किया जाता है, और यहां पर हमें रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी नहीं निकालना है, बल्कि अमाउंट निकालना है। अमाउंट जो है इन टर्म्स ऑफ द रुपीज निकालना है। Taxable value of 1 tin is rupees 2800. Then taxable value for 2 tin. That means taxable value for 2 tins is equal to 2800 into 2, it is equal to 5600. Rate of GST is 28%. Then rate of CGST is equal to rate of SGST. This is equal to half of the rate of GST. It is equal to half of, and rate of GST is given as 28%.
This is equal to 14%. Therefore, amount of CGST will be equal to 14% of the taxable value, total taxable value, that means taxable value of two tins. 14%, 5600 multiplied by 14%. This is equal to 56. When we will remove the sign of percentage, then 14 will be divided by 100. 20 cancelled out 20. 14 into 6 is 84. 14 5 is 70. 70 plus 8 is 78. That means amount of CGST is rupees 784. Amount of SGST is equal to amount of the CGST, which will also be equal to 784. Always remember, the amount of CGST is equal to amount of SGST, or we can say that rate of the CGST and rate of SGST are equal. That means GST is divided equally between state and central government. Question number 4. The taxable value of a wristwatch belt is rupees 586. Rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ से जो है रिलेट होती है. यहाँ पर भी जो है, अगर आप एक दुकान पर जो है गए, आपको जो है रिस्ट वॉच बेल्ट लेना है जिसकी प्राइस 586 है. ये जो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर जीएसटी लेवी की जाती है. रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर. आपको जो है शॉपकीपर को जो है कितना पैसा पे करना पड़ेगा अगेंस्ट द इनवॉइस. जब भी शॉपकीपर कोई बोले कि इसकी प्राइस जो है XYZ कुछ भी वो बोलता है, तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है या जीएसटी जो है इसमें ऐड किया जाएगा. यहाँ पर जो है टैक्सेबल वैल्यू है, दैट मीन्स इस टैक्सेबल वैल्यू पर जीएसटी अप्लीकेबल होगी. एंड द अमाउंट ऑफ द जीएसटी कितना होगा? टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ जीएसटी. Taxable value is given as 586 multiplied by rate of GST. जहाँ पर भी रेट का बात आए वो हमेशा जो है परसेंटेज के टर्म में होती है. एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. 18%. That means it is equal to 586 multiplied by 18 divided by 100. मैंने पहले से यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन कर लिया है. 100 से डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो है डेसिमल जो है 2 डिजिट के जो है लेफ्ट में लगेगा. इट इज इक्वल टू 105.48. एंड इनवॉइस वैल्यू आर द अमाउंट विच द कस्टमर विल पे टू द शॉपकीपर. दैट मीन्स इनवॉइस वैल्यू equal to taxable value, that is the 586 plus the GST amount 105.48. This is equal to 0.48. 6 5 11 1 8 9 and 5 1 is 6. 691.48 रुपीज कस्टमर जो है शॉपकीपर को पे करेगा. क्वेश्चन नंबर 5.
the total value with GST of a remote controlled toy car is rupees 1770. Rate of GST is 18% on toys. Find the taxable value, CGST and SGST for this toy car. मजेदार क्वेश्चन. यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ द जो टॉय है वो दी गई. टोटल वैल्यू इज द टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू. चलिए पहले इसको जो है कैलकुलेट करते हैं. लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी रुपीज एक्स. अज्यूम कर लिया, कोई बात नहीं. तो टोटल वैल्यू is equal to the taxable value plus GST. Taxable value plus GST. Total value is given as rupees 1770. Taxable value we have assumed X plus GST. GST is always applicable on the taxable value. That means it will be the X multiplied by rate of GST, and rate of GST is the 18%. That means when we will remove the sign of percentage, we have to divide it by 100. This is equal to X plus 100 means 0.18, 0.18 X. This is equal to 1 plus 0.18 X, or it is equal to 1.18 X. 1770. Therefore, X is equal to 1770 divided by 1.18, multiply it by 100, we will get 1770 into 100 divided by 118. 15 8 the 120 and 12, 15 ones are 15 and 27 is 7, 2, 15 MS. This is equal to the 15, and 15 into 100 is 1500. That means the value of X, and X is the taxable value. So the taxable value of the remote control toy car is rupees 1500. Next part, find the value of CGST and SGST. Rate of CGST will be equal to half into the rate of GST. CGST is equal, rate of CGST is equal to rate of SGST is equal to half of the CGST. Half of the GST, and GST का जो है 18% है. This is equal to 9%. Therefore, amount of CGST will be equal to the taxable value 1500 का 9%. 9% means 9 divided by 100. ₹135 and rate of SGST मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस कम पड़ रहा.
rate of okay, rate of SGST is equal to the rate of the CGST, which will be equal to the rupees 135. Always remember, rate of the SGST is equal to rate of the CGST is equal to the half of the rate of GST. इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।